सो अगर आप भी ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ देखते हो और ऐसे लोगों को सुनते हो जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव करा है, जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, एंड आपको ऐसा लगता है कि आप उससे इंस्पायर्ड हो रहे हो, इंस्पिरेशन मिल रही है, बट इवन आफ्टर बिंज वॉचिंग सच सक्सेस स्टोरीज और सच लिसनिंग टू सच पीपल, उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी की कमी हो रही है, आप और डिस्करेज फील कर रहे हो, देन दिस वीडियो कैन एक्चुअली challenge your thoughts. So why we listen to such success stories, right? Whenever we listen to a person जो कि अपनी लाइफ के स्ट्रगल शेयर कर रहा है एंड दे आर इन अ गुड पोजिशन राइट नाउ, दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ, दे हैव अचीव सम इमेंस अमाउंट ऑफ सक्सेस, why we listen to that person? So the thing is, द पर्सन हु इज़ स्ट्रगलिंग राइट नाउ, जैसे कि हम या फिर कोई भी इंसान है जो कि लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहा है और दे आर गोइंग विद अ वेरी बैड फेज, सो वेन एवर दे लिसन टू सच पीपल जो कि जिन्होंने लाइफ में कुछ कर रखा है, दे हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर डूइंग उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा है एंड दे हैव कम फ्रॉम ज़ीरो. वो कोई अगर वैसा इंसान ऐसा बोलता है कि हम ज़ीरो से आए हैं या फिर हमने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करा है और लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, देन वी एक्चुअली रिलेट विद दैम और हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि इफ़ दैट पर्सन कैन डू समथिंग लाइक दैट, तो मैं क्यों नहीं कर सकता. एंड इट्स नॉट द सक्सेसफुल वर्जन ऑफ देम जिनको हम प्रेज करते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं एट दैट मोमेंट. वी वर एडमायरिंग दैट इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ दैट, हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं. एंड देयर इज़ वन मोर रीज़न वाई वी लाइक सच सक्सेस स्टोरीज इज़ दैट कि इनका एक क्लीन स्ट्रक्चर होता है. लाइक व्हेन एवर यू लिसन टू सच सक्सेस स्टोरीज या आप किसी भी पर्सन की, मोस्टली मैं बता रही हूँ, मोस्टली लोग के आप सक्सेस स्टोरी सुनोगे, देन इट हैज़ अ क्लीन स्ट्रक्चर. लाइक a person who is born in poverty or in misery or someone who is just like a normal person like us, and then life through challenges and then they realize how the world is, then they started struggling in their life, they had downfalls, then they had a breakthrough and then they get successful. This sounds like a typical success story, like not typical but every other success stories we hear all over the internet, and people really talk about that phase of life जहाँ पे जो person है, they are having a downfall, they are struggling in their life, they have to do such repeated things every day in order to keep their life going on. And another thing is why we like such success stories is that the survivorship bias. Like right now there are a lot of people in education, in content creation, working on the same business idea, who are very competitive, who are very talented, and they are working towards the same life goal. But out of such thousands of people, only few get what they started and others might change their path. So listening to success stories is good, but binge watching such success stories can actually distort your timeline. Suppose there is a 21-year-old boy or person who has achieved a lot of immense amount of success in their life, and you're watching that person, you are 23, 24, 25 or basically you're in your 30s or 20s और आप ऐसे चीज़ें देख रहे हो and you are working on something, already you are working on something and you are struggling through something, and when you watch such things or binge watch such things, then you might think कि आई एम वेरी लेट इन लाइफ, मैंने सब कुछ बहुत लेट स्टार्ट करा एंड यू स्टार्ट हरिंग, you lose your patience, you start hurrying in over things, and then you listen to a 50-year-old person who became billionaire. अभी उसने recently एक दो सालों में business start करा था. So you feel like that there is a lot of time ahead. I still have a lot of time ahead and I will do something good in life later. So yeah, these both things have created distortion in your timeline. So basically when you binge watch such success stories or listen to such people a lot, here I'm not saying don't listen to such people or don't watch such things. I would say watch a lot. I do that also, but here I'm saying don't binge watch them a lot, because it can have consequences also. Like you are doing your own thing, and when you watch such things a lot, then you doubt your own potential, you doubt your own work, that कि वो person की personality ऐसी है, मेरी ऐसी नहीं है, I'm different person and I might not achieve things that way. All of this comparison and distortion of timeline can actually destroy your life path, and you start copying their life decision onto your life without even realizing that your life decisions are different, your life situations are different, right? आपको ज़रूरत नहीं है. if you look at it clearly, then you will find it out कि success stories, these are just examples, they are not
They are not rules that you have to follow it anyway. They are just examples. You can just take inspiration from it. You don't have to follow it blindly. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक आटा चक्की में ही काम करना है उस 12th फेल मूवी की तरह, तभी आप एक यूपीएससी निकाल पाओगे, तभी आपका यूपीएससी क्रैक होगा. यू कैन स्टिल क्रैक यूपीएससी इवन इफ यू कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. यू डोंट हैव टू मैच योर लाइफ डिसीजन और योर लाइफ टू दैट पर्सन हु इज सक्सेसफुल. वेल, वो तो मूवीज़ की बात है. सो इफ़ यू ऑल्सो फील लाइक दैट योर लाइफ इज स्लो, योर प्रोग्रेस इज स्लो एंड इट इज़ नॉट एज शोन in those struggling success stories, then it might mean that those chapters, you are in those chapters of life which are often cut in those success stories, and we all know that how boring it is, but we also know that it is the real thing, right? So yeah, this is all for this video, and here Palak Pandey signing off.